box is old, but the pens are amazing, really. I guess gold plated. Hey everyone, this is your host Muhammad Daudpota with another video. And in today's video, I'm going to unbox for you guys a very special pen, which is an Osmiroid left-handed made in England. So let's start. Oh, I almost forgot. Before that, I want you guys to kindly hit the subscribe button and the bell icon so you stay updated with every new video I upload. Let's start. So this is the packaging of the set, and this is an Osmiroid made in England. It's one of the best calligraphy pens out there. It's a vintage set, so that's why you can see, it's kind of dirty and looks old, but it is really, it's worth gold, seriously. So calligraphy background by Dennis Brown or Dennis, जो भी आप कहें इसको, I don't know, but 3 calligraphy set. These are the sizes mentioned. Okay, so it comes with 1 pen module and 3 nibs basically, and this is the converter उसको कहते हैं, जिससे आप ink easily fill कर सकते हैं. ये cartridges होते हैं, ठीक है. So this is आप देख सकते हैं कि this will be good for Arabic calligraphy. This will be best, for Arabic calligraphy. But originally this is for left-handed people, तो आइए इसको खोलते हैं, ठीक है. Really excited क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इसका वेट कर रहा था और फाइनली इट इज़ हियर. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है, इंशाल्लाह, तो आपको मज़ा आएगा. तो मैं अनबॉक्स करूँगा और इससे मैं लिखने की कोशिश करूँगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. That was a rough start. इसके नीचे सबसे पहले एक मैनुअल है, बहुत खूबसूरत Osmiroid कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शन लीफलेट. इसमें केयर बताई गई है, ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड एंड एवरीथिंग, बेसिक्स बताए गए हैं. फाउंडेशनल हैंड इसमें थोड़ा सा कैलीग्राफी स्क्रिप्ट्स के बारे में बताया गया है, और ये वाला सेट तो मैं यूज़ कर चुका हूँ. दिस इज़ एन अमेजिंग सेट. और अपने वीडियो भी देखिए, इसमें कैलीग्राफी लिख रहा हूँ पेपर के ऊपर. थोड़ा सा स्क्रिप्ट्स, पुरानी स्क्रिप्ट्स जो हैं इसमें बताइए. ये हो गया. देन यू हैव दीस. तो अब हम क्या करेंगे इसमें, ये आप देख सकते हैं कि although the box is old, but the pens are really, they are amazing. I don't know if this looks gold plated though. Gold plated लग रहा है ये मुझे. अल्लाह वाला क्या है. अच्छा, ये तो हमारा कैप और बैरल हो गया, ठीक है. तो अब हम ये वाली निप ट्राई करते हैं, B4. केयरफुली इसको निकालेंगे और देखते हैं कार्ट्रिजेस में इंक है या नहीं. इंक है तो सही, but
लेट्स नॉट टेक द रिस्क इसमें, क्योंकि बहुत पुराना सेट है, विंटेज सेट है, तो उसमें हो सकता है कि सूख गया हो, इंक सूख गई हो। ठीक है, तो हम कन्वर्टर के साथ इसको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। सम काइंड ऑफ I don't know what's inside here, यानी हम इसको निकालेंगे। अच्छा जी, तो अब हम इसको पेन की निब इंसर्ट करेंगे। दिस इज द ब्यूटीफुल I guess gold plated pen, इसमें इंसर्ट करेंगे। इंक यूजुअली मैं जो यूज़ करता हूँ वो पेलिकन की करता हूँ। दिस इज़ अ गुड स्टैंडर्ड इंक। फाउंटेन पेन्स में जो मैं यूज़ करता हूँ पेलिकन की इंक यूज़ करता हूँ। इसको हम कम्प्लीटली डिप करके नो इट डिड नॉट वर्क। 3 बार हम इसको करेंगे कम्प्लीटली डिप करके। देख सकते हैं इंक इसके अंदर आ चुकी है। एक्सक्यूज मी। तो बाय द वे दिस सेट इज़ अवेलेबल, नॉट द होल सेट, लेकिन मैं इसमें से कुछ निब्स जो है वो सेल कर रहा हूँ। 2 ऑफ दीज, किसी को लेनी हो तो कर सकते हैं। यू कैन परचेज, कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे या व्हाट्सएप पे, तो इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड टू इट। सिर्फ मैं निब्स सेल कर रहा हूँ बिकॉज आई ऑलरेडी हैव दिस पेन मॉड्यूल। और एक निब मेरे पास, तो किसी पास ऑस्मिरोइड का पेन हो तो यू कैन परचेज द निब्स फ्रॉम मी। तो इसको बैरल लगाते हैं। और इसको कैप करते हैं। Let's put the ink pot aside. ठीक है, याद देखिए कि इसमें 3 निब्स थी, एक पेन मॉड्यूल था, इसमें कैप और बैरल होता है, 2 कार्ट्रिजेस थे और एक कन्वर्टर था। तो साइड पे करते हैं और पेन चालू करते हैं। Okay, so let's try writing something. Wow, this is mashallah, it's next level. Seriously, smoothness है इसमें। वाह, और यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। It's my first time with this pen. हमेशा जो है वो थोड़ा मसला होता है जब नए पेन से लिखते हैं, तो ज़ाहिर है नॉट यूज्ड टू इट, तो मसाइल होते हैं। मैं बहुत तेज़ लिख रहा हूँ। अरबिक कैलीग्राफी याद रखिएगा कि तेज़ नहीं होती है, इट्स वेरी स्लो। अगर आप समझ रहे हैं कि तेज़ होती है तो ट्रेडिशनल वन, I'm talking about the traditional Arabic calligraphy, वो स्लो होती है बहुत। अगर आप समझ रहे हैं कि तेज़ होती है तो आपने टाइम लैप्स वाली वीडियोस देखी होंगी, उसमें यूजुअली
increase the speed. More different even. It's a good pen. Feels premium in the hand, especially the cut and the nib quality. It's amazing, amazing. So thank you so much for watching this video. If you liked it, hit like and subscribe to my channel and let me know in comments. Take care and bye.